So before moving to the definition of log, I just want to relate log with something we already know. Just try to understand that. If I give you a relation between three parameters or three variables a, b and c like this, a plus b equals c. अगर मैं आपको ए बी सी के बीच में आई गिव यू दिस रिलेशन, एंड आफ्टर गिविंग दिस रिलेशन, if I give you any two variables, if I give you the value of any two variables and ask you to find the third variable, so would it be possible for you to find or not? Definitely yes. Like Yes. if I give you a and b, if I give you a and b, and if I ask you to find c, what you will do? You will add. But if I give you B and C and ask you to find A, what you will do? We will Subtract. shift. Subtract. Yeah. करेक्ट. Okay. इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी बोलो या a इक्वल टू सी माइनस बी बोलो, दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग. ये दोनों रिलेशंस ए बी सी में सेम रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बोथ दीज इक्वेशंस, अग्रीड और नॉट? इसी तरीके से आई एम गिविंग यू वन मोर सिनेरियो. वहां से आपको लॉग एक्चुअली में समझ में आएगा. a to the power x equals n. I have given you one equation. Again, there are three variables involved. Now, since there are three variables involved, if the value of any two variables are given, it is obvious that we should be able to find the value of the third variable. But now, since there are three variables, there are multiple options in which two variables can be given. So I am just drawing that a, x, and n. Let's say a is given and x is given. Would you be able to find the value of n? Would you be Yes, sir. able? Let me give Yes, you yes, sir. one case. Let's say a is 2, a is 2 and x is 3. Can anyone tell me the value of n? 8. 8. It is 8. It is very easy. What process we followed in order to find 8? हमने exponentiation किया है. This process is called exponentiation, like addition, subtraction. वैसे a to the power x करना is called your exponentiation. ठीक है, ये हमें already आता है. In fact, we already know some properties of exponents जो हमें याद होनी चाहिए, like a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. A to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. A to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn. MN. Right, so these are some properties which we have already studied in the junior classes, and we know how to take power. Okay, so that's what we have done in this case. Let me give you another case. X is known and n is known, and I am asking you to find a. What you will do? Let us take an example. Let's say x is 3, n is 8, and I am asking you to find a. What you will do? Anyone? Cube root of 8. We Correct. will find You cube root will of you will write this equation in another form, and you will write it as a equals n to the power 1 by x. Obviously, these two equations are same or not? These two equations are representing same relation between ax and n. The difference is this is written in exponential form, this is written in root form. Correct? All of you agree with this or not? So Yes, sir. it means 8 to the power 1 by 3 will give you 2. तो उससे हमारे पास 2 आंसर भी आ जाएगा. So this process is called taking root. This also we know how to do. We have already studied this in the junior classes. Now there comes the third scenario. And what is the third scenario? I'm changing the color of my pen. A और x given था, n पूछा था, we found out. X और n given था, a पूछा था, we found out. What is the third possibility? A and n are given, and हमसे x की वैल्यू पूछी है. Try to imagine, relation यही है, a to the power x equal to n. ओके, अब हमें n दिया है. वी नो द वैल्यू ऑफ n, वी नो द वैल्यू ऑफ x, वी नो द वैल्यू ऑफ a, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये x क्या है इस रिलेशनशिप में? x को हम लोग पावर
और एक्सपोनेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. डेफिनेटली। तो इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें वो पावर निकालना है जिसको a पर रखने पर व्हाट आई विल गेट द वैल्यू एज n। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, उसके बाद देयर आर सो मेनी ट्रिवियल थिंग्स लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लाइक द एप्लीकेशंस ऑफ लॉग, उसको समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। द कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। ओके, तो लेट्स से a और n दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डू यू हैव अ मेथड या डू यू हैव अ टूल जिसमें हम लोग सीधे a और n डाल दें और मुझे x मिल जाए? नॉट येट। अभी हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है। एंड फॉर दिस सिचुएशन वी डिफाइन अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड लॉगरिदम। राइट? तो लॉगरिदम का रिप्रेजेंटेशन आप सब लोगों ने देखा होगा, इसको अपन शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, जिसमें दो इनपुट्स हम लोग करते हैं। कोई बता सकता है वो दो इनपुट्स कौन कौन से हैं? P and ए को हम लोग बोल देते हैं amino बेस। लेट्स गिव सम नेम to all these three quantities. Let's call a as base, let's call x as power, and let's call n as number. ओके, हमने ये नाम दे दिया। तो इसका मतलब लॉग को क्या क्या देना पड़ेगा? हमें एक तो बेस देना पड़ेगा और नंबर देना पड़ेगा। और हम लॉग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? Power. दैट इज पावर। You agree or not? This is altogether a new tool जिसकी requirement mathematicians felt, and that is why एक नए tool को define किया गया which is called logarithm. Like if we talk about addition, तो addition always require two numbers. आप एक नंबर को कभी ऐड कर ही नहीं सकते। तो सिंस एडिशन रिक्वायर्स टू नंबर्स, ऑन द सिमिलर लाइंस लॉग रिक्वायर टू थिंग्स, then only it can give the output, and the two things are base and number. एंड उसका आउटपुट क्या होता है? एक ऐसी पावर जिसको बेस पर रखने पर व्हाट शुड आई गेट? द नंबर। यस या नो? Yes, sir. Is this Yes, point sir. clear to Yes. everyone? I need a reply from everyone at this point of time. So, I sir, can you repeat what you just said? I am just saying कि like what happens in case of addition. Addition is a machine. Yeah, addition is a tool which always takes two numbers as input and gives you the sum as the output. Correct? On the similar lines, log is a tool which always takes two things as an input. And what are those two things? It takes a base and it takes a number. And what output it gives? It gives a power, it gives something which when raised on base, it should be equal to this number. क्योंकि a to the Number. power x n के बराबर होना चाहिए ना, उसी के लिए तो अपन ने ये log लिखा है। Yes. Now is this clear to everyone? Yes, Yes. sir. Let me Yes, sir. acquaint you with the, I know you are taking already classes since few days, but still there are some yes no button on your participants panel. तो just to let me know कि अगर आपको समझ में आ गया है, you can click on the yes button or you can also write in the chat box and you can reply always. That is not an issue. Okay? So we will use these kind of feedbacks for better communication. Okay? And it would be better अगर आप सभी लोग communicate करते रहोगे, तो I would be aware कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, ठीक है। तो अब सिर्फ बात आती है कि लॉग का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिशियंस ने उसका रिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया है एंड उसका रिप्रेजेंटेशन पता है क्या होता है? लॉग दो चीजें रखनी होती है ना, नंबर को हम लॉग के बगल में रखते हैं और ये जो बेस है उसको लॉग के थोड़ा नीचे रखते हैं, बेस ए। एंड कैन एनीवन टेल मी इसका आउटपुट क्या होता होगा? इसका आउटपुट होता होगा x। X. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं a प्लस बी इक्वल टू सी लिखता हूं या a इक्वल टू सी माइनस बी लिखता हूं, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। द डिफरेंस इज यहाँ पे एडिशन फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। ऑन द सिमिलर लाइंस, इफ आई राइट a टू द पावर x इक्वल टू n और log n टू द बेस a इक्वल टू x, ये दोनों सेम रिलेशन है कि डिफरेंट? Same relation. These are same relation. These are same relation. It's just that their form is different. This is called exponential form. This is called exponential form. And this is called logarithmic Log. form. Log.
just related to addition and subtraction. This is called your addition. This is called your subtraction. On the similar line, this is called your exponential form. This is called your logarithmic form. Whenever need arises, you can write exponential form in logarithmic form and vice versa, logarithmic form into exponential form. Are you guys following me? What we are Yes, discussing sir. here? Okay. Sir, can we note it down? Yeah, sure. Please note it down. In Yeah, fact, okay. I will just share the definition also in the next slide of log. Yeah, okay. Yeah. फाइन. तो अब मुझे एक बात बताओ, द कंक्लूजन ऑफ द पोर्शन वी डिस्कस सो फार, दैट a to the power x इक्वल्स n बोलो या log n to the base a equals x बोलो. It means one and the same thing. It's just that it is the exponential, it is the logarithmic form and it is the exponential form. तो कोई मुझे सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर कर सकता है क्या? log 8 to the base 2. Can anyone answer? Is equal to 3. करेक्ट. क्या होगा log 8 to the base 2? log 8 to the base 2 is a पावर जिसको 2 पर रेज करने पर 8 मिलना चाहिए. जस्ट थिंक हियर, इस इन दोनों को ढंग से देखो बस. log n to the base से अगर x के बराबर है, इसका मतलब ये x क्या हुआ? दिस x इज द पावर जिसको जब हम इस बेस पर रखते हैं, देखो ना, a to the power x बेस पर रखते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? n मिलना चाहिए. So this is the definition of log. What is the definition of log? Log 8 to the base 2 is a power. Log 8 to the base 2 is a power on which when base is raised, when base 2 is raised, I should get 8. करेक्ट. तो फिर तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है यार. log 8 टू द बेस 2 कितना होगा? 2 की पावर में क्या करें सो दैट आई गेट 8? फाइनल आंसर इज योर 3. 3. इज दिस पोर्शन, ये बात समझ में आई क्या? दिस इज द डेफिनेशन. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसे नोट कर लेना. फिर भी ये सब जो बातें इस बोर्ड पे लिखी हुई है, प्लीज नोट इट डाउन. Yes, sir. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग. So let's read the definition. हमें अभी इतना समझ में आ गया कि a to the power x equals n बोलो या log n to the base a equals x बोलो, one and the same thing. Hence, logarithm of a number to some base is the exponent by which base must be raised in order to get that number. सिर्फ इतनी डेफिनेशन पे आप फोकस करो. ये सब जो कंडीशंस हैं, वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस. Logarithm of a number to some base is the exponent by which base must be raised in order to get that number. And logarithmic form and exponential form are equivalent forms. Got it, guys? Note it down. Let me ask you few very simple questions. Log sine 30 degree to the base 2 is equal to. Can anyone answer? So can you repeat? Yeah, I have written the question on the board. Yeah, okay. Log sine 30 degree to the base 2. So is it -1? Okay. I'll just confirm in a moment. Yes, -1. Sure. Yes, sir. ठीक है. So now just try to understand. There are now two ways to answer these kind of questions. First way. First, let's substitute the value of sine 30 degree. We all know it's 1 by 2. तो log 1 by 2 to the base 2. ये हमसे पूछा है. One way of answering this question is कि just imagine orally, just imagine कि what should I put in the power of 2 so that I get 1 by 2? What should I put in the power of 2 so that I get 1 by 2? Answer अपने आप मिल जाएगा. -1, 2 की पावर -1 is 1 by 2. Yes, Yes sir. or no? Yes. फर्स्ट वे. और सेकेंड वे, कभी कभी हम इस तरीके से अगर ओरली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज log 1 by 2 to the base 2 को just assume it to be x.
So we have to find the value of x and convert this into exponential form. तो जब exponential form में convert करोगे तो क्या मिलेगा? 2 to the 2 power raised to x x. should be equal to 1 by 2. Yes. That is 2 to the power minus 1. Now 2 to the power x equals 2 to the power minus 1, hence x equal to minus 1. So this is your answer. So anyway you can solve this question, that should not be a problem. ये questions आपको clear है everyone? Yes, sir. Guys, this is our first class, so obviously whenever a new course is started, it takes time to settle down, both for faculty as well as students. So that's why I am asking again and again, so that I am clear कि आप सबको समझ में आ रहा है. Okay? Clear है सबको, right? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Parthiv? Sunjyoti? Yes, sir. All right, हाँ, हाँ. fine. Amisha? Yes, sir. All right, fine. Thank you. ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखा. अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो बिफोर जंपिंग इनटू दोस क्वेश्चंस, मैं कुछ सिंपल प्रॉपर्टी आपके सामने रख रहा हूं. फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. जस्ट ट्राई टू आंसर दोस. फर्स्ट, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. First, log n to the base n when number and base are same. Can anyone tell me the answer? n की पावर में क्या One. करें so One. that I get n? Answer One. is 1. One. यहाँ से हमें समझ में आता है कि कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए log 5 to the base 5, आंसर इज 1. सोचना ही नहीं है ज्यादा. log Yes. root 3 to the base root 3, आंसर इज 1. कुछ नहीं सोचना है, आंसर 1 होगा. क्लियर है सबको? दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, log n to the base 1 by n or log 1 by n to the base n. That is number and base are reciprocal of each other. Answer is -1. -1. अभी अपन ने क्वेश्चन भी देखा था. तो दिस इज द सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो कि हमको समझ में आनी चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी. Third property is also very interesting. Try to answer. Log 1 to the base a when your number is 1. 0. 0. Sure. Just think about this. Sir. a की पावर में मैं क्या करूं? What should I put in the power of a so that I get 1? Let me derive. Let's say it is equal to x. If I have assumed it equal to x, तो exponential form क्या होगा? a to the power x equals 1. Guys, एक और बात, जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है. log n to the base a इक्वल टू x है. अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे अपन विजुलाइज करते हैं कि a को हम उधर लेकर गए, तो a आ गया x की जगह और x आ गया a की पावर में, और इधर n बचेगा. तो n विल बी लेफ्ट ऑन द लेफ्ट और इधर a आ जाएगा और x उसकी पावर में चला जाएगा. करेक्ट? तो ये याद रखने का तरीका है बस. अदरवाइज देयर इज नो फिक्स्ड मेथड ऑफ रिमेंबरिंग दीज थिंग्स. इट इज टोटली अप टू यू. आपको अल्टीमेटली ये याद होना चाहिए. बट जनरली इस तरीके से हम बता देते हैं कि यार आप ऐसा करो, बेस को उधर ले जाओ. बेस को उधर ले जाओ तो बेस विल कम हियर, x will come in power and n will be left on the left hand side and you will get the exponential form. Got it? ठीक है. अगर ये बात समझ में आ गई तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया. a to the power x equal to 1 आया and anything to the power x अगर 1 के बराबर है then it has to be a to the power 0. It implies x equal to 0. Hence your third property, that is log 1 to the base a is always equal to 0. This is a very important property. In fact, we like कि नंबर लॉग का क्या हो, 1 हो, क्योंकि जहां पे लॉग के अंदर 1 आ जाता है योर फाइनल आंसर इज 0. तो लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लॉग ऑफ sec square theta minus tan square theta to the base 5. Can anyone tell me the answer? 0. Sure? Pakka? I have not told you the value of theta. Still I know कि you guys can easily conclude कि this answer will be 0. Why? Because sec square theta minus tan square theta is always equal to 1.
1. log 1 to the base 5 will always be equal to 0 irrespective of this base. Got Hmm. it? ठीक है. So Yes, this was the third fundamental property of log जो कि समझ में आनी चाहिए. There is one more property. उस property को समझने के लिए आपको थोड़ा सा focus करना पड़ेगा. Let's try to understand that property as well, and then we will do some problems. Okay. So let's see the fourth property. I am just writing an expression here, and will give you 30 seconds to think over it. Let me see if you guys can comment anything. 3 to the power log 5 to the base 3. ये एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया ना. It's like 3 to the power log 5 to the base 3. So that is fine. Log 5 to the base 3 is a number. मतलब it is also equal to something ना. तो उस something को I have put it on 3. No problems. कुछ तो आंसर आएगा ना. Like if I ask you a very simple question. 3 to the power log 4 to the base 2. Can anyone tell me the answer of this? It is easy. This one. Log 4 to the base 2 कितना होगा? So is it 9? Yeah. First tell me log 4 to the base 2 कितना होगा? Log 4 to the base 2. 2. Correct. Everyone knows this will be 2. How? We have already discussed that. So it is 3 to the power 2. And 3 to the power 2 is 9. That is fine. Simple question. On the similar lines, now I have given you an expression 3 to the power log 5 to the base 3. Now the problem here is that you cannot tell the value of log 5 to the base 3 accurately without, let's say, with the help of calculator. You cannot tell, but with calculator obviously आप कर पाओगे, but अभी हमें without calculator ही करना है. Okay, तो log 5 to the base 3 को exact तो नहीं बता सकते, but still this is solvable. कैसे? Just hear me for next 2 minutes. I am assuming log 5 to the base 3 as x. Can I do this? कुछ मिल नहीं रहा तो एटलीस्ट उसे x तो एज्यूम कर लेते हैं. और अगर मैंने उसे x एज्यूम कर लिया तो कैन एनीवन टेल मी अवर क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा? 3 टू द पावर x. Yes, sir. हमसे यही पूछा है ना. X is equal to log. राइट. अब मुझे बताओ log 5 टू द बेस 3 अपन ने जब x एज्यूम कर लिया तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 टू द पावर x कितना हो गया? 5 के बराबर. Yes, sir. Right or wrong? 4. So our original question जो 3 to the power x बन गया था, ultimately now it is equal to 5, and this is your final answer. Yes, sir. Got it. So the next मैं फिर से repeat करूंगा. Don't worry guys, सबके लिए मैं फिर से repeat करूंगा. The property says a to the power log n to the base a. It means if this number and this base are same, everything gets cancelled and your answer is n. Like this happened in this case also. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, बट एटलीस्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. दैट इज a to the power log n to the base a is always equal to n. कैसे? एक बार देखते हैं. मुझे एक बात बताओ, log 5 to the base 3 ओरली डिस्कस कर रहे हैं अपन. log 5 to the base 3 आपको क्या देता है? X. एक ऐसी पावर जिसको 3 पर रखने पर 5 मिलना चाहिए. Yes, sir. अब देखो मैंने इस पावर को 3 पर रख तो दिया. I have raised this power on 3 only in the question itself. Are you guys able to visualize this? Yes, sir. तो आंसर सीधे सीधे क्या होना चाहिए? 5. इनफैक्ट ये दोनों तीनों स्टेप्स भी स्किप कर सकते हो. ओरली यू कैन से इट विल बी इक्वल टू 5. And if you are facing some issue in like concluding orally, then don't worry. Assume log 5 to the base 3 as x. इसमें तो हमें कोई स्टॉप नहीं कर सकता. और जैसे हमने log 5 to the base 3 को x मान लिया, जैसे हमने log 5 to the base 3 को x एज्यूम कर लिया, so 3 to the power x 5 के बराबर आ गया. ये तो इक्विवेलेंट थे. और क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? क्वेश्चन 3 to the power x में कन्वर्ट हो गया था. तो क्वेश्चन 3 to the power x में कन्वर्ट हो गया था, उसका वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 5. हेंस योर फाइनल आंसर इज 5. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी. Yes, sir. Guys, is this property clear to you? Yes, yes. Yes, sir.
Okay, Yes, sir. guys, it would be great if everyone can reply. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine, great. ठीक है. So these are like our 4 fundamental properties of log, which are very simple. Log n to the base n 1, log n to the base 1 by n minus 1, log 1 to the base a 0, and log n, sorry, a to the power log n to the base a equals n. Okay, so I think these are the 4 properties which are also written in the next slide, but you can note it down here. Just note it down. Then we will give some time on understanding these conditions. लॉग के बारे में हमें काफी बातें समझ में आने लगी. आई थिंक विद इन 30 मिनट्स ओनली. इट्स बीन 30 मिनट्स, राइट? सो हमें इतनी बातें समझ में आ रही है. दैट्स ग्रेट. नाउ वन मोर थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड विद लॉग इज द करस्पॉन्डिंग कंडीशन. तो इस कंडीशन के बारे में आई वांट टू गिव 5 to 10 minutes, and so that this is clear to everyone, just try to understand this and focus. Okay, I am again giving one analogy. Just tell me one thing. If you see an expression root x, so is there some condition on x for which root x is real? Now, let me put my question once again. It's an independent concept. Okay, it has nothing to do with what we have discussed so far. I am just asking कि अगर root x कभी आपके सामने आता है, तो इसमें we can put different values of x. If I put 4, I will get an output. Fine. Yes, If sir. I put 5, I will again get an output. Can I put -2 in this? No, sir. Can I put -2 in root? Tell me. No. No. नहीं put कर सकते. Why? Because whenever a tool is created, whenever a Square mathematical, of any number. correct. So whenever a mathematical tool is created, it has some features, it has some properties. Not every tool accepts all the numbers. Another example, tan x. Tell me, x की जगह you can put 30 degree, no problem. You can put 45 degree, no problem. You can put 60 degree, no problem. Can you put 90 degree? What is the output of 90 degree? You remember? Not defined. Not Not defined. तो not defined. बेसिकली 90 डिग्री हम पुट नहीं कर पाते. 90 डिग्री पे इट इज नॉट डिफाइंड. Similarly, under root we cannot put a negative value because it is not defined. Correct? So every tool has some constraints, right? There are some tools which have no constraint. For example, sin x. Sin x is a good function. आप इसमें सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. हम इस साल पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. आप लोग पढ़ोगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको. आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर. In x square also you can put all the values and you will get an output. Yes या no? But Yes. root x में ऐसा नहीं हो सकता. Got it? उसी तरीके से हमने आज एक नया टूल डिस्कस किया, which is your log n to the base a, correct, equals to x. In log जो हमारा नंबर और बेस होता है, there are some constraint or number and base also, and there is a reason behind that. This is first time I would be saying कि reason हो सकता है अभी हम 100% नहीं समझ पाए. जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे in our course, I will explain you the reason कि उसका reason क्या है. But today is too early to understand that reason. That is fine, but हमें at least आज वो condition पता होनी चाहिए कि when this log is defined. So the condition is log accepts only positive numbers. Log accepts only positive numbers. तो मुझ और साथ साथ log accepts only positive base. लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव बेस ही एक्सेप्ट कर पाता है. एंड वन मोर कंस्ट्रेंट, बेस कैन नॉट बी 1. उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं. सॉरी, बेस कैन नॉट बी 1. अगर मैं किसी लॉग का बेस 1 लेता हूं, जस्ट सी, log n to the base 1 equal to x. Can you tell me what will be the value of x? 1. 1. I mean, Sure, 1 no, होगा. it can vary. Sir, Number will be 1. No matter. वन Any extra वन value की is No, वन can की be- पावर it में can मैं vary. क्या रखूं so that I get n? Anything you put, it's going to be 1.
log 2 to the base 1 का वैल्यू बताओ मुझे. log 5 to the 1. base 1 का वैल्यू बताओ. Oh, no, no. Will it be 1 or No, not? it will vary. What But will sir, be how the will you get? answer? So how will you get Answer ही नहीं higher? है. We won't There get there 5. will be Sir, no we won't get answer. power. There will be no answer because 1 की पावर में आप कुछ भी रखोगे, you will get 1 only. You will not get 2. कभी 2 मिल ही नहीं सकता. Right or wrong? Log 5 Yes, to sir. the base 1 is also not defined. Hmm. Correct. इसका मतलब log n to the base a, whenever base is 1, it is not defined. Got it? चलो एक तो ये बात Yes, लिख ली. sir. और दूसरी बात, जो नंबर और बेस है ना, बस उनका पॉजिटिव होना जरूरी है. उसका रीजन आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. आप प्लीज इसके आगे नोट कर लो कि यार ये हम आगे जाके समझेंगे जब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स का हमें नॉलेज हो जाएगा. उसके बाद हम लोग समझेंगे. जैसे रूट एक्स में यू नो कि it accepts only positive values. Similarly, log n to the base a accepts only positive values. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था. ये कंडीशन को देखो. n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. अभी तीनों कंडीशन समझ में आ गई. जिसमें a नॉट इक्वल टू 1 तो हमने समझ लिया है, और n greater than 0, a greater than 0 को I am just asking you to accept this condition at this point of time. We will justify it later in some days. Got it? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yeah, but n और Yes, sir. दोनों 1 होंगे तब तो it is definable, right? अगर दोनों 1 होंगे, log 1 to the base 1, then also there is a problem. Can you give me a unique answer of this? Hmm. 1 की No, पावर sir. में क्या करें so that I get 1? I can It do can be anything. anything, sir. 1 की पावर Yeah. में I can do 2, 3, Any 4, answer. 10, 100. इसका मतलब इसके कितने आंसर्स होंगे? Infinite. 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 Natural numbers. Yeah. So then also this is not as per the conventional definition of log, because generally हम जो mathematical tool define करते हैं, for one input we get one output, but it is giving infinite output. So that is why we have kept this case separate. 1 के लिए हमने define ही नहीं किया है log को, because Oh. वो it behaves arbitrarily for a equal to 1. Got it? Yes, sir. राइट. ठीक है. तो अभी अपन को सिर्फ ये दो कंडीशंस और हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, एंड दीज 4 प्रॉपर्टीज. आई होप ये सारी बात समझ में आई होगी. देयर इज वन स्मॉल क्वेश्चन. क्वेश्चन इज log 2x plus 1 to the base x minus 1. I just want to know the value of x जिसके लिए this is defined. ये डिफाइन हो. कोई बता सकता है ये डिफाइन कब होगा? जब ये वाली चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव. It means 2x plus 1 should be greater than 0. Yes, sir. And similarly, x minus 1 also has to be greater than 0. This is the Oh, second true. condition. And Log by- x minus 1 should not be equal to 1. Hmm. ये तीन कंडीशंस हमें लगानी होगी. तो सॉल्व करते हैं. यहां से x कितना आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2. सिंपल इनइक्वालिटी है. 1 को वी हैव टेकन टू द राइट, डिवाइडेड बाय 2. आई गॉट x ग्रेटर देन माइनस 1/2. हियर आई गेट x ग्रेटर देन 1 एंड हियर आई गेट 1. x कैन नॉट बी इक्वल टू 2. Fine. So these are the value of x for which this type of expression is meaningful. Otherwise, it won't be defined. Got it? So if I ask you x equal to 5 के लिए ये वाला पूरा expression meaningful होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Just check x equal to 5 satisfies all three condition or not. क्या 5 minus 1/2 से greater है? Yes, it is. Is 5 greater than 1? Yes, it is. Is 5 not equal to 2? Yes, it is not equal to 2. 5 is satisfying all the three conditions. So will it be a meaningful quantity? Yes, it is a meaningful quantity. Yes, sir. Got it, guys? What I meant to say here? Yes, sir. Yes, sir. Sure? Okay. Yeah. Fine, fine. So I think यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी. This is the basic of log. Let's move forward. I am erasing everything whatever is written on the board. Some small questions. Let's try to answer few of these. This one.
this one, this one, this one, this one. Let's try to answer these 5 questions first. Log 16 to the base 1 by 2. I need answer from everyone, guys. You have to participate. Log 16 to the base 8. Third, log 9 root 3 to the base 1 by 3. Fourth, log to the log 4 to the base 2 whole to the base 2. And fifth, log tan 30 degree to the base 3. Let's take it as x. Let's say your answer is x. You have to find the value of x. Convert it into exponential form. अगर आप इसको exponential form में convert करोगे, what you will get? 16 equals 1 by 2 to the power x. अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, you have to write both sides in terms of 2. No, Ashwath, not right. Check once again. 16 can be written as 2 to the power 4. And 1 upon 2 to the power x can be written as 2 to the power minus x. Right? Now 2 to the power 4 equal to 2 to the power minus x. Equate the powers. Base are same. Powers will be equal. Minus x equals 4. It implies x equals minus 4. Minus 4 is your answer. Yes, Kapila. Now it's right. Parthiv, clear है first question? Ashwath? हाँ सर, clear. Okay? It's all right. अगर कोई हमसे silly mistake हो गई, that is completely fine. हमने first time log आज ही पढ़ा है सब लोगों ने. That is completely acceptable. Right? But अभी हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग approach कर रहे हैं question को. चलो, let's move to the second question. Correct, Amisha, your answer is right for the second question. Others tell me. अब मुझे सॉल्व करके बताओ सेकंड क्वेश्चन को. कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इफ देयर इज समथिंग a to the power fx equals a to the power gx. अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, इट इंप्लाइज fx equals gx. व्हेनेवर योर बेस आर सेम, पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो. बस ये हमें याद रखना है. कैन आई टेक इट एज x? इट इज मैथमेटिकली राइट. और अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये मुझे कोई बता दो. सुनज्योति, टेल मी. 16 इक्वल्स to 8 raised to x. करेक्ट. ये हमें क्लियर है. अब हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ 2 की पावर्स में एक्सप्रेस करना है. बिकॉज 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 एज वेल एज 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2. टेल मी, Ali. 2 raised to 4. 16 is 2 raised to the power 4 and 8 can be written as 2 raised to power 3. 3 whole to the power x. अब अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी रिवाइज करवाई थी, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn. Yeah, got it. Correct. So finally what we will get, 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 3x. Now base are 4 by same, 3. powers will be equal, 4 equal to 3x. It means x equal to 4 by 3. This is your answer. अभी क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. गाइस, थर्ड वन इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब मुझे थर्ड वन बताओ. लेट्स टेक इट एज x. x लेने पर क्या मिलेगा अपन को? 9 रूट 3 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर x. इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. अब इसके बाद आपको सब कुछ 3 की पावर्स में लिखना है. कैन एनीवन सजेस्ट 9 रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं? 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. रूट 3 इज बेसिकली 3 टू द पावर 1 by 2 and 1 by 3 is 3 to the power minus 1 whole to the power x. Got it? Yes, sir. Powers will add. What you will get? 2 plus 1 by 2. क्योंकि what is your property? a to the power m into a to the power n is your a to the power m plus n.
तो it will be 2 plus 1 by 2. 2 plus 1 by 2 is 5 by 2 is equal to 3 to the power minus x. It implies 5 by 2 equals minus x. It implies x equal to minus 5 by 2. So your answer is minus 5 by 2. Yes, sir. Got it. Sure everyone, clear है? Hmm. Yes. चलो हाँ सर लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. फोर्थ वन में इफ आई आस्क यू इस लॉग का नंबर क्या है, इस लॉग का नंबर अनदर लॉग है, लॉग 4 टू द बेस 2, जिसको Yes, हमें sir. इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा. आई थिंक लॉग 4 टू द बेस 2 की वैल्यू तो हम ओरली बता सकते हैं. 2. दिस इज 2. Sir, answer is 1. Answer is करेक्ट one. करेक्ट करेक्ट. One. तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा log 2 to the base 2 में, and log Yes. 2 to the base 2 is 1. ये तो प्रॉपर्टी Yes, है. one. when number and base are same, answer is 1. ठीक है. लास्ट वन is also very simple. log tan 30 डिग्री होता है 1 by root 3 1 by root 3. to the base 3. Can anyone tell me the answer? -1 is it? -1 by 2. Okay, correct, it's -1 by 2. अगेन अगर ओरली नहीं हम निकाल पा रहे हैं, ट्रीट इट एज x. राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 1 by root 3 will be 3 to the power x. Now 1 by root 3 can be written as 3 to the power minus 1 by 2 equals 3 to the power x. Hence your x is equal to minus 1 by 2. Got it? Yes, sir. Got it. Okay, so good, Amisha. Yes. All of your answers were right in the first attempt. Others, I hope अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे questions, right? Sir, I did not get the fourth one. Fourth one, okay, no problem. Let's see once again. Fourth one, log 4 to the base 2 to the base 2. हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी. Now इसमें सबसे पहले हम इसको इंडिपेंडेंटली सिंप्लीफाई करते हैं. log 4 to the base 2. तो log 4 to the base 2 क्या होता है? इट्स अ पावर जिसको 2 पर रेस करने पर वी शुड गेट 4. अगर आप इसको x एज्यूम करके भी सॉल्व करोगे तो 2 to the power x will be 4. इट मींस x इक्वल टू 2. तो ये पूरी की पूरी चीज 2 के बराबर है. So our question now changed to log 2 to the base 2. And whenever number and base are same, your answer is 1. This is the property of log we just discussed few minutes back. All right? Sir, I got it. Okay. Can Yes, I sir. erase whatever is written on the board? Yes, Yes. sir. Yeah, okay. So now I want to give couple of more questions from this page. One question is this. And now I am sure आप इस question को कर पाओगे. And the next question is this last one. इन दो questions को और try करता हूँ. ठीक है, let's do this one. Log a Sir, square. I didn't get the first one. Yeah, we are doing log a square minus 1 to the base 1 by 3. This is equal to -1. We have to solve this and find the value of a. Fine. First remove log. जैसे आप log remove करोगे, what you will get? A square minus 1 equals 1 upon 3 to the power -1. Correct? ये step सबको समझ में आना चाहिए. Conversion from logarithmic form to exponential form. Next, a square minus 1 will be 1 upon 3 to the power -1 will be 3. Correct? Basic Yeah. rules of exponents. It implies a square is 4. You have to take under root. Can anyone tell me whenever you take under root क्या आता है? Plus minus sign. Finally a equal to plus minus 2. Right? So both Okay, a sir. equal to plus 2 as well as -2 satisfy this. ठीक है, the last one. If log to the base 7, log to the base 3, log to the base 2, x is equal to 0, find x. हम पहले x निकालेंगे. एक बार x आ जाएगा, then we can find the value of this. So let's break this question. Let me hide this. I hope ये हटा पाऊं मैं. Let me hide this. मैंने ये हाइड कर दिया. अब मुझे बताओ, अगर जो मैंने पोर्शन हाइड किया है
if I treat it as something, let's say y, ब्लू बॉक्स जो है, तो क्वेश्चन क्या हो गया अभी, log y to the base 7 equals 0, yes या no? Yes, sir. I did that only. Okay, so tell me what is the value of y. Y is 7 to the power 0, that is 1. 1. It means your blue box is 1 or not? Yes, sir. Okay, I'll just check ये हटता है क्या, हट गया, right. So now tell me, ये जो अपना blue box था, this portion, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1. Write Yes. it down. Log to the base 3, log to the base 2 x. This is equal to 1. 1. Got it? 50. Okay, let me draw another box now. मैं इसको cover करता हूँ, इसको red box. Now tell me, आपका question क्या है? Your Sir, it question, will be the same. yeah, आपका question है log z to the base 3 equal to 1. Can anyone tell me the value of z? Z 1. will be 3, no, 3, 3 to the 3. power 1. So it is Yes. 3. So answer is 8, I guess. Yeah, Sir, correct. What is the value of x? 8. Yeah, correct, it's 8. 8. तो ये रेड बॉक्स कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 3. लेट्स रिमूव दिस रेड बॉक्स. देखते हैं रेड बॉक्स के पीछे क्या था. रेड बॉक्स के पीछे था log x to the base 2. So finally we got log x to the base 2 as 3. करेक्ट. अब ये तो सिंपल लॉगरिथमिक इक्वेशन है. x will be equal to 2 to the power 3, that is 8. Got it? x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के बराबर. किस किस को Yes, क्लियर है ये? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Parthiv? Yes, yes. Okay, sure. So x equal to 8. But हमसे क्वेश्चन में it was not asked to find the value of x. We have to find log x, that is 8 to the base 0.125. वैसे आंसर राइट में लिखा हुआ है. Can anyone tell me 0.125 कितना होता है? It is 1 by 8. 1 by 4 is 0.25. So 1 by 8 is 0.125. So your question is log 8 to the base 1 by 8, which is very easy. Answer is -1. Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yeah. तो I hope ये basic questions आप सब लोगों को समझ में आ गए होंगे. We have discussed the definition of log, the conditions of log, the conversion of logarithmic into exponential form, and the fundamental properties of log. Okay, let's move forward. So these are the 4 properties which we discussed. This one, this one, this one, and this one. तो ये चारों properties already आप लोग लिख चुके हो, आपको समझ में आना चाहिए. Let's move forward. Few more questions, then we will move to the next concept. First I want you guys to do question number 2. वैसे उसका आंसर दिया हुआ है. We have to prove this. To prove, these all are like prove that वाले question. Not all, the first and second. Okay, let's do the second question. Log tan 1 degree. Okay, interesting. Log tan 2 degree. Very interesting. इनमें से किसी की वैल्यू नहीं पता अपन को. Log tan 3 degree. Okay, up to log tan 89 degree. अच्छा, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पता है एक इंटरव्यू में पूछा गया था. जस्ट ट्राई टू आंसर. एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d अप टू x माइनस z. इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. दिस इज द ओनली क्वेश्चन और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. एंड वन ऑप्शन हैज कि डेटा इनसफिशिएंट. अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ ए प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया. लेट मी गिव यू द हिंट और फिर आप सब लोग एक साथ आंसर बताना. x minus a, x minus b, x minus c, x minus d. What does this dot dot represent?
कि it will go up to Z, A, B, C, D up to Z, yes or no? Yes or no? Yes. So will Yes, there sir. be a term x minus x somewhere? Yes. Yes, yes. And x minus x is? 0. Oh. Zero. And hence this expression is? Oh. 0. 0. This is the answer. Very simple question. But trust me, ऐसा question interview में पूछते हैं and नहीं कर पाते अपन लोग आंसर यार, and that then after that it is so embarrassing कि यार इतना easy question हमसे छूट गया. Simple but tricky. Yeah. Now tell me the answer of this question. There was a reason why I put this question in front of you. So tan 30. No tan 30. Think about No, tan no. 45. Tan 45 1. Tan Yeah. 30. Yeah. 1 by So there will be a term log tan 1. 45 degree. Yes. And tan 45 ka value is? 1. It means there is a term which is log 1. Yes. Which is equal to? Log 1 is. Log 1 is equal to? अरे guys, क्या बात कर रहे हो? Log 1 is equal to? 0. 0, sir. 0. देखो जब whenever base is not mentioned ना, by default base is taken as 10. Okay. 10. Whenever 10. Whenever base is not mentioned, but in good questions base is always mentioned. तो base के बारे में हम आगे बात करेंगे. इधर base is 10. Okay. Yes. पर वैसे भी log 1 to any base answer is always 0. Right or wrong? Hence Yes, sir. एक term 0 आ गया. Hence it will make this product 0. Hence your right hand side. Got Oh. it? Clear है सबको? Yes. Oh, yes, sir. Sure. चलो. Log of x minus 3 to the base 2 equals 4. Tell me the value of x. X minus 3 equals 2 to the power 4. That is 16. So x equals 16 plus 3, that is 19. Okay. Now, जब भी हमें कोई इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना, we should always check कहीं ऐसा तो नहीं है कि log undefined हो रहा हो. तो if I want to apply the condition, तो कोई बता सकता है इस log पे condition क्या होनी चाहिए थी? Number that is x minus 3 has to be, remember, number has to be positive. Greater than 0. Correct. It means x has to be greater than 3. So Yes, sir. 19 3 से बड़ा है. Hence it is the final answer. Yes. This is the final answer. So we can use this for verification, right? Yes, yes, correct. अब अगर ये वाली बात सबको समझ में आ गई, let's do question number 3. I like this question a lot. 7 to the power log x to the base 7 plus 2x plus 9 equals 0. We know this property, right? अभी हमने डिस्कस करी थी प्रॉपर्टी क्या होती है? a to the power log n to the base a is always equal to 1. n. Oh, sorry, one, n. Yeah, we just discussed this property. We understood Yes, this property a few We- minutes we- back. Yeah. Okay. Amisha, your answer is not right this time. Just So, check so once x again. plus 2x, 3x. So, minus 3. Minus 3. Minus 3, yes. Okay. Minus 3. Sure. सब लोगों का -3 आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है. Now the point is -3 is not right. -3 is wrong answer. That is why this 7 is raised to x. What? No. No, sir. Nothing. okay. That is why I like this question a lot, because it teaches us something. So answer -3 निकलना 7 चाहिए. into 3. 7 cube plus 2x plus 9. नहीं. It's better. उससे better तो -3 is the better answer. अगर आप -3 बता रहे हो तो that is acceptable, but -3 is not right. Can someone figure out the reason why -3 is not right? Very logical reason.
Sir, it is not Because greater sir, than 0. Sir, because x should not be minus 9. Correct. Sorry, minus 3. Yes, sir. It Correct. cannot be. करेक्ट. greater than 0. मैं आप Should लोगों be को greater तब than से बोल 0. रहा हूं कि हमें कंडीशंस को भी याद रखना है. Whenever this type of term is there, तो नंबर और बेस क्या होने चाहिए लॉग के? पॉजिटिव. Positive. बेस इज 7, तो Yes, इट इज sir. पॉजिटिव. सो x has to be greater than 0. Then only this question will be meaningful. Agree or not? Yes, sir. Now let's Yes, solve. sir. When we applied this condition, now there is no issues. Now let's start solving this question. So by applying this property, this thing will cancel out and you will just get x. Fine. X plus 2x plus 9 equal to 0. 3x plus 9 equal to 0. It implies x equals minus 3. Does minus 3 satisfies this condition? No. No. Answer rejected. Yes, sir. फाइनल आंसर नो सॉल्यूशन. अगर आप -3 निकाल के इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे तो विल इट सैटिस्फाई? इट वोंट, बिकॉज log -3 to the base 7 is not defined. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं एंड नाउ आई थिंक सब लोग आंसर कर पाएंगे. 7 to the power log x to the base 7 minus 2x plus 9 equal to 0. मैंने जस्ट यहाँ प्लस से माइनस कर दिया. नाउ टेल मी द 9. आंसर. 9. श्योर? Yes, sir. Yes, right. Now the answer is 9 and it is correct. sir. It will be accepted. Why? Because Because plus 9 is positive. Got it? Positive. तो अपन क्या Yes. करेंगे? x minus 2x plus 9 equal to 0. It means minus x plus 9 equal to 0. It implies x is equal to 9, which is greater than 0. Hence accepted. Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now let's try question number 4. Let's try. I hope आप एक ही बार में सही आंसर बताओ. Let's try. 2 to the power log of x minus 3 to the base 2 plus twice of x minus 3 minus 12 equals 0. ठीक है. Can anyone tell me before starting this question what should be the initial condition? ये log के अंदर का number, it should be positive. Yes, sir. It means x should be greater X than should be 3. plus more than 3. Right. So ये हमने पहले ही नोट करके रख लिया, so that if our answer does not satisfy this, we will reject that answer, and if it satisfies this, we will accept. Is this logic clear to you guys? Okay. Yes, Now sir. let's simplify. sir. अब यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो भी यहाँ पे है that is the base of log. Again we will apply this property. सब कुछ cancel होके you will get the number as the output. इसका मतलब what you will get? X minus 3 plus Yes, sir. twice of x minus 3 minus Minus 12 12. equal to 0. Okay. Now tell me 1 times x minus 3 plus 2 times x minus 3 add करने पर it will be 3 times x minus 3 X minus 3. equals 12. Simple calculation, simple maths. X minus 3 is 4, x equals 7. Now 7 satisfies x greater than 3. Yes, hence 7 is the answer. Got it, everyone? There are 4 more properties जो कि हमें समझ में आनी चाहिए. Let's try to understand those properties. First property, log m to the base a plus log n to the base a. Like if there are 2 log having same base and we have to add those two and write it in terms of single log, then it is doable, it is possible. Okay. Can anyone tell me कैसे करें? किसी को पता है property? I think सभी लोग first time पढ़ रहे हैं log, right? Yes, sir. First Yeah. one. Yeah. So the property says log m plus log n is equal to log mn to the same base a. मैं इसको एक property को I will prove it also.
डोंट वरी, एक प्रॉपर्टी को अपन प्रूव भी करेंगे, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब दो अलग अलग लॉग हैं, बेस सेम होना चाहिए, तो आई कैन कंबाइन दोस टू लॉग्स एंड राइट इट एज लॉग m इंटू n टू द बेस a। तो इसका मतलब मुझे बताओ, log 5 to the base 15 plus log 3 to the base 15. Can anyone tell me the answer of this? Log 15 by Log 15 by 15. और वो So कितना log होगा? 1. That is 1. Correct. Log So 1 this will be 3. log 5 into 3 to the base 15. That is log 15 to the base 15, which is your 1. Got it? That is log. That is? So that is 0 now. Then log No. 1. It is not log 1, it is just 1. Acha. 15 to the Log power 15 to 1. the base 15 is 1, not log 1. Oh, okay. Got it ना? ये 15 by 15 नहीं है, it is 15 to the base 15. Let me like write it properly. It is log 15 to the base 15, which is 1. Correct ना? Okay. Yeah. Got it. ठीक है, अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता log 5 to the base 15 plus log 10 to the base 15, तो हम इसको क्या लिख पाते हैं? We could have written log 5 into 5 10, into 50 10. to the base 15, बस इतना ही लिख सकते थे, इसके आगे at present कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? And we can Yes, sir. apply these properties in reverse direction also. अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, log x into y to the base 5 को सिंप्लीफाई करना है, तो it can be written as log x to the base 5 plus log y to the base 5. Yeah. करेक्ट? Correct. ठीक है, तो ये Yes. दोनों तरीके से ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। मैं ऐसी एक प्रॉपर्टी डिराइव कर रहा हूं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगी बाय लुकिंग एट दिस डेरिवेशन। तो लेट्स से अपन को ये जस्टिफाई करना है कि ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं? हमें लॉग में तो डील करना नहीं आता, बट वी नो हाउ टू डील इन एक्सपोनेंट्स। तो लेट्स एज्यूम दिस एज x एंड लेट्स एज्यूम दिस एज y। तो नाउ टेल मी, log m टू द बेस a को अगर आपने x माना, तो a टू द पावर x कितना हो गया? m। करेक्ट? log n टू द बेस a को यू हैव एज्यूम्ड इट एज y, इट मींस a टू द पावर y कितना हो गया? n। Yeah. Let's multiply these two equations. If you multiply these two equations, what you will get? You will get a to the power x into a to the power y equals mn. It implies a to the power x plus y equals to mn. Amen. ठीक है, और अगर ऐसा आ गया तो अब मुझे बताओ, if I take log on both sides, या if I want to convert this into logarithmic form, can anyone tell me क्या आएगा? Sir, x plus y X is equal plus to y is equal to log mn to the mn base to the a. base a. To the base A. करेक्ट? और x और y क्या था? x और y था अपना log m to the base a plus log n to the base a, that is coming out to be log mn to the base a. तो अगेन गाइस, डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। पहला डेरिवेशन था, मैंने करके बता दिया सो दैट हम इसे लॉजिकली एक्सेप्ट कर लें। बेसिकली हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए और ये अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है? तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आई Oh, मेरे so they won't ask the derivation. व्हाट? They won't ask the derivation, right? या दे वोंट आस्क, Okay. राइट? हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log m प्लस log n इज ऑलवेज इक्वल टू log mn, और वाइस वर्सा log mn कैन बी रिटर्न एज log m प्लस log n विद द सेम बेस। बस ये समझ में आना चाहिए, राइट? तो आई एम इरेजिंग वॉट एवर आई हैव रिटर्न हियर, द डेरिवेशन पार्ट, एंड लेट्स सी द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेगमेंट। So this was the first property. Second property, log m to the base a minus log n to the base a. Any guess? जब यहाँ सेंटर में प्लस था, M by प्रोडक्ट N. हो गया था m और n का, अब क्या हो जाएगा? डिवीजन। Log. करेक्ट?
log m by n to the M by base n. a. ठीक है? The This is our second property. Base has to be same everywhere. So this is our second property. वो हमें समझ में आनी चाहिए. We will do some problems on this in some time. Let's move to the third property. Log m to the power p to the base a. Your number has some power p. So the good part is that this power comes outside. These are the properties. This power comes outside, and what you will get, p into log m log to the m base to the a. base a. Yeah. This is very, very, very useful property. अभी in fact some questions which we did previously हम उसको सीधे इनसे solve कर सकते थे. अभी मैं बताऊंगा कैसे. Just try to remember this property. तो मुझे बताओ log 32 to the base 2 कितना होगा? एक तो आप डेफिनेशन से भी बता सकते हो. Secondly, you can use this property. 32 can be written as 2 to the power 5 5. Yes, to sir. the base 2. I can bring this 5 outside with the help of this property. What I will get, 5 times log 2 to the base 2. And log 2 to the base 2 is 1. Final answer is 5. 5. Yeah. Got it everyone? Yes. तो अब जैसे जो रूट वाले प्रॉब्लम थे, like log root 3 to the base 3, कैसे लिख सकते हैं इसे? log 3 to the power 1 by 2 to the base 3. 1 by 2 comes outside. Inside you will get log 3 to the base 3, which is your 1. Final answer is 1 by 2. 1 by 2. Got it? So this is a very useful property जिसको हम बहुत सारे questions में use भी करते हैं. And now let's move to the fourth property. Fourth property is log m to the base a to the power p. Now base has some power. This power also comes outside, but where? Division. In denominator. So this is our last property of this set. तो ये चार प्रॉपर्टी हमें समझ में आनी चाहिए. Just note it down, all these properties. So can you explain the fourth property again? Yeah, sure. So what I told in the fourth property कि in the third property number has some power, तो power बाहर numerator में आती है. In the fourth property base has some power, तो ये power बाहर आती है but in denominator. तो for example log 3 to the base root 3 for example. So can I write it like this? 3 to the base 3 to the power 1 by 2. Yes, sir. Now this 1 by 2 will come outside in the denominator. That is 1 upon 1 by 2 log 3 to the base 3. Oh. This is 1 and 1 upon 1 by 2 is your 2. So final answer 2 है. Got it? Yes, ठीक है? sir. अगर ये समझ में आ गया तो now try to answer this question. Log of 81 to the base 27. Tell me the answer. Using this property. Chalo, let's do it. I want to use this property. I'm just changing the color of the pen. 81. 81 can be written as 3 to the power 4. 27 can be written as 3 to the power 3. Let's apply property number 3 and 4 simultaneously. This 4 will come in numerator. This 3 will come in denominator. And what will be left? Log 3 to the base 3. Yes or sir. no? Yes. This will be 1. Final answer Yes, sir, 4 got by it. 3. 4 by 3. Got it everyone? Yes, sir. Okay, whatever is written on board, please note it down. Then we'll do some problems on these properties. So these four properties are next set of properties. हमें ये चारों properties समझ में आनी चाहिए. Log m plus log n is log mn. Log m minus log n is log m by n. Log m to the power p is p log m. Log m to the base a to the power p is 1 upon p log m. Okay, so these are our next set of properties. Yeah. Next question. Very easy question. Find the value of
log 10 to the base 2 minus log 125 to the base 8. Imagine one thing, here all these properties are applicable when you have same base, both sides, right? Here base is 2, here base is 8. Can I make this base as 2 somehow? Yes, sir. 2 cube. Correct. So log 10 to the base 2 minus Minus log 5. 120. In fact, 125 I can be cube. written as 5 5 cube cube. and 8 can be written as 2 cube. 2 cube. Both 3 will come outside, one in numerator, one in denominator. Yes, sir. Minus 3 upon 3 log 5 to the base 2. 2. Yes. Got it? ये तो cancel हो गया. Our question become now log 10 to the base 2 minus log 5 to the base 2. Log Now 10 upon log 5 m minus base log 2. n, which is your log m upon n. M upon n is 10 by 5. Base will be 2 only. 10 upon 5 is 2. So it's log 2 to the base 2. Final answer is 1. Is this 1. clear to everyone? Next question is, if log ab cube to the base 10 equals log a square b to the base 10 equals 1, find log ab to the base 10. Let me give you one hint in this question. You guys can continue solving. Log ab cube to the base 10, ये 1 दिया हुआ है. तो let me simplify this. इसको simplify करेंगे तो I can write it as log a plus log b cube equal to 1. Base everywhere is 10. So I'm not writing base again and again because I know base is 10. So I can just break down this single log into 2 using this property in reverse direction. Yes, And sir. then I can bring this 3 outside. So what I got? I got log a plus 3 log b equals 1. Okay. This is one equation which I am getting. Similarly, there was one more situation given. And the other situation was log a square b to the base 10 is also 1. Both things were equal to 1. So I can write it as log a square plus log b equals to 1. That is 2 log a plus log b equals 1. This is equation number 2. Now tell me what we have to find. We have to find log AB. Can log AB be written as log A plus log B? Yes, sir. It means you have to find the value of log A plus log B. And you have two equations in log A and log B. Now can you solve this question? This question is equivalent to a linear equation in two variable wala question of class 10. Yes, sir. Oh, yes, I got it. Just treat this as x, log a. Treat this as y. This is your x. This is your y. Your two equations are x plus 3y equals 1 and 2x plus y equals 1. Solve these two equations simultaneously and tell me the value of x. Tell me what is x and what is y. Let's multiply this by 2. What I will get and subtract the 2x minus 2x. So it will be y minus 6y. It will be minus 5y is minus 5y equal to 1 minus 2 minus 1. So y is 1 by 5. And this is 1 by 5. 1.6. And this is 2 by 5. Correct? ये आ रहा है? Yes, sir. It means log A is your 2 by 5 and log B is your 1 by 5. हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था log AB, which will be is equal to log A plus log B. So final answer will be 2 by 5 plus 1 by 5, that is 3 by 5. This is your answer. That is log to the base 3, log to the base 2,
log to the base root 3 and number is 81. Find the value of this. Let's first solve this part. Can anyone tell me इस part का value क्या आएगा? Let me write as log 81 can be 8. written as 3 to the power 4 and root 3 can be written as 3 to the power 1 by 2. So 4 will come outside, 1 by 2 will come in denominator. Inside I will get log 3 to the base 3. This will be 1. And 4 upon 1 by 2 is 8. Hence this is 8. Yes or Yes, no? sir. Yes. Yes. Now the question is changed to log to the base 3, log to the base 2, 8. Let me change the pen color again. I have to find the value of this. Log 8 to the base 2. Everyone knows log 8 to the base 2 is basically log 2 cube. Sorry. 2 cube to the base 2. 3 will come outside and log 2 to the base 2 1. Directly orally भी बोल सकते थे. So this is your 3. So now your question is changed to log 3 to the base 3. And the final answer is 1. That's it.